जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे आपण माने देखिबे अष्टम श्रेणी इंग्लिश रो रिटर्न वर्क जहाँकि 5 मार्क पई रहिछि। आपण मानको दुईटी रिटर्न वर्क करिबार अछि। तो चलंतु रिटर्न वर्क गुडी को देखिबा। देखंतु एक नंबर रहिछि द टीचर विल रीड आउट 10 sentences from any chapter of the English textbook and the student will write। एथिपाई इंडिकेटर्स आउ मार्क्स रही देखो 10टा सेंटेंस लेखिबा 2 मार्क, करेक्ट स्पेलिंग रे लिखिथिले 2 मार्क, लिजिबल एंड गुड हैंड राइटिंग विथ प्रोनाउंसिएशन 1 मार्क, टोटाल 5 मार्क रही। एबे देखिबा कार्यटी जेहेतु ये इंग्लिश रो रिटर्न वर्क रही आपण माने इंग्लिश रे याकू लिखिबे रिटर्न वर्क स्कूल नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक एवं सबमिटेड डेट। तापरे कार्यटी को आरंभ करिवे। देखंतु टॉपिक टी को एपरि भाबरे लिखि नेबे। एटी टॉपिक टी निया होछि राणा प्रताप एंड हिज चेतकरू। आपण माने चाहिले अन्य टॉपिक मध्ये देई पारंती। There are many examples of love and friendship between human beings and animals. Rana Pratap and his horse Fox friendship has become the matter of many poems and stories. Rana Pratap fought the Battle of Haldighat in 1576 against Akbar. Rana Pratap was seriously wounded in the battle. His horse friend Chetak was also wounded. To save Rana's life, Chetak carried him away from the battlefield. There are many examples of dogs who died to save the lives of their masters. The way Chetak died to save his master's life surpasses them all. After Chetak's death, Rana wept severely, kissed his wet face. I like Chetak of his love and loyalty to his master. 3 नंबर अच्छी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर राइटिंग फ्रॉम प्रोज और पोएट्री। जेकोसी गोटे रो लिखिबे। प्रोज लिखिले पोएट्री लिखिबा आवश्यकता नाही, पोएट्री लिखिले प्रोज लिखिबा आवश्यकता नाही। एग्जांपल्स देइछि देखंतु टॉपिक अछि द लॉस्ट कैमेल रो जदि प्रोज लिखुछंती एवं जदि पोएट्री लिखुछंती स्केयरक्रो रो। एबे देखिबा इंडिकेटर्स एंड मार्क्स। कंटेंट कवरेज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट थिले 2 मार्क, नीट लिजिबल गुड हैंड राइटिंग 2 मार्क, इनोवेटिव क्रिएटिविटी 1 मार्क, टोटल रहीगला 5 मार्क। एबे देखिबा रिटर्न वर्क टी। प्रथम पेज रे आपण रिटर्न वर्क रो हेडिंग दे देबे। तार टॉपिक, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, सबमिटेड डेट सब लिखि नेबे। तापर एई परि भाबरे हेडिंग दे देबे। देखंतु टॉपिक अछि द लॉस्ट कैमेल। ये प्रोज टी रहिछि। हु इज इंटेलिजेंट इन द स्टोरी द लॉस्ट कैमेल? Why do you think so? The old man is intelligent because he could use his eyes and intelligence and knew that the camel was old, lame and blind in one eye. तापरे 2 नंबर क्वेश्चन टी अछि डू यू थिंक द मर्चेंट इज क्रुएल? Why? Yes, I think that the merchant is cruel because he had given the camel heavy loads to carry even though it was old, lame and blind in the left eye. तापरे जदि पोएट्री रो नेउछंती टॉपिक नेम अछि स्केयर क्रो। 1 नंबर क्वेश्चन अछि व्हाई हैज द लैंड ओनर गिवन हिज बो टू द स्केयर क्रो? द लैंड ओनर गिवन हिज बो टू द स्केयर क्रो to scare the birds and animals. 2 नंबर क्वेश्चन अछि who does the poet consider living and why? आंसर अछि he considered the scarecrow living because it has been completely dressed with his owner's shirt, pant and cap. रिटर्न वर्क टी रहिछि वर्कशीट पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी देखि पारुछंती। वोकाबुलरी वर्क अछि कंप्लीट द पैराग्राफ बाय लिसनिंग टू द टीचर पेज 119 रो जहाँकि रही वर्ड फॉर्मेशन एपरी देइथिबो डग वेल ताकू आमे कंबाइन करिकी डग वेल बोल लिखिबा। सेहीपरि फुटप्रिंट एहीपरि लिखिबा। क्लैरिटी ऑफ कंटेंट एंड कंप्लीट द टास्क पई 2 मार्क रही। राइट्स विथ करेक्ट स्पेलिंग पई 2 मार्क, गुड हैंड राइटिंग पई 1 मार्क, टोटल रहिला आपनकर 5 मार्क। एबे देखिबा रिटर्न वर्क टी। प्रथम पेज टी रे आपनको रिटर्न वर्क स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, टॉपिक नेम, सब्जेक्ट नेम एंड सबमिटेड डेट लिखिबार अछि। तापर पृष्ठ रे एई कार्यटी को करिवे।
वर्कशीट पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज वोकाबुलारी वर्क यहीपरि भाव में हेडिंग देला परे देखंतु 1 नंबर अच्छी बाथ सूट गेप रहीकि अच्छी ताकू आमे कंबाइन करके लिखिबा बाथ सूट सनफ्लावर सनफ्लावर स्विम सूट बार्थ राइट ट्री हाउस डोर बेल रेनबो फुटबॉल यहीपरि भाव में रही रिटर्न मार्कटी पैराग्राफ शॉर्ट एसे लेटर राइटिंग पैरालाल राइटिंग राइट ए स्मॉल पैराग्राफ अबाउट योर फ्रेंड एठी देखंतु फ्रेंड विषय लिखिपारे नचेत आपण माने स्कूल विषय लिखिपारे योर फादर विषय योर मदर विषय एंड गेम यू लाइक मोस्ट ये सब विषय लिखिपारे एठी एक देखंतु एग्जांपल्स गोटे बिजू पट्टनायक एंड हिज डाकोटारू 5टा लाइन देइछि एहाकु मध्ये आपण लिखिपारे मु एठी आपण मानक पई योर बेस्ट फ्रेंड नै आछि तो चलंतु एबे देखिबा एहारो इंडिकेटर्स कोन कोन रहिछि देखंतु राइट कंप्लीट सेंटेंस अबाउट द टॉपिक एज पर रिक्वायरमेंट पाई अच्छी 3 मार्क गुड हैंडराइटिंग करेक्ट स्पेलिंग पाई 1 मार्क इनोवेटिव क्रिएटिविटी पाई अच्छी 1 मार्क टोटल रही आपणकर 5 मार्क प्रथमे रिटर्न वर्क रो हेडिंग्स स्टूडेंट्स नेम डिटेल्स लिखिला परे नेक्स्ट पेज रे याकू लिखिबे एठी मो माय बेस्ट फ्रेंड नेछि स्मिता इज माय बेस्ट फ्रेंड सी इज माय क्लासमेट we sit together on the same bench she is very kind and helpful she shares her lunch with me we play together she helps me in my study we tell each other our secrets she never gets angry with me I am lucky to have a good friend like her 5 number picture reading write simple sentence by observing the picture teacher can give any picture from the textbook or beyond एठी आपण माने टेक्स्ट बुक रु किंबा अलगा कौनसी ठिरु मध्य देई पारिबे एथि पई देखंतु द पिक्चर अंडरस्टैंड द पिक्चर एंड राइट 10 सेंटेंस पई 2 मार्क गुड हैंडराइटिंग पई 1 मार्क करेक्ट स्पेलिंग पई 1 मार्क इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी पई 1 मार्क टोटल रहिला 5 मार्क फास्ट पेज रे रिटर्न वर्क रो हेडिंग देकी डिटेल्स लिखिला परे तार नेक्स्ट पेज रे इपरि लेखा जिवो देखंतु एठी मु बिजू पट्टनायक एंड हिज डाकोटास रो सेंटेंस को नेछि एवं पिक्चर को नेछि सेही पिक्चर रिलेटेड सेंटेंस गुडी को हेउछि बिजू पट्टनायक वाज द सन ऑफ आवर एक्स चीफ मिनिस्टर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक This picture is about Biju Patnaik and his aircraft Dakotas. He is a politician and also a pilot. We guess from the picture Dakotas is a aircraft's name. Biju Patnaik was a risk taker, a symbol of courage, bravery and adventure. Dakotas were used to carry materials to the war site after Second World War. Biju Patnaik wanted to buy one of the Dakotas for Bhubaneswar Flying Club. When Biju was about to fly an aircraft, heavy storm was building up, but he ignored and took off. He returned to Bhubaneswar with his first Dakotas. एहीपरि भाबरे आमर अष्टम श्रेणीर 5टी रिटर्न वर्क्स आपण मानक पई आनी देइथिली आशा करूची वीडियोटी निश्चय भावे हेल्पफुल होइथिबो जदि मो वीडियोटी भलो लागिछि वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे जो बंधु माने मो चैनल रे नुआ अछंती निश्चय भावे सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहुछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।